Hello and good morning to all my dear students and a warm welcome in the class of Accounts Standard 11th. Today we will start with chapter number 6, the new chapter for you people. The name of the chapter is Subsidiary Books. As and when the number of transactions increases or it becomes in large number, it becomes very difficult to maintain all the transactions in one simple book. So to avoid this limitation or to overcome this limitation, all transaction in all different books are to be recorded. Therefore, similar type of transactions are to be recorded in separate book. This separate book is known as subsidiary book. Let me clarify you the meaning now. Meaning of subsidiary books. Subsidiary books refers to the journals kept for specific transactions of similar nature. सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसे हम सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं. Subsidiary books are also known as day books. For example, I have made you more clear. For recording all credit purchase transactions, purchase book is to be prepared, and for recording all credit sales transaction, sales book is to be prepared. जिसका मतलब क्या होता है कि हमने जितने भी उधार पे परचेस ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे के सारे एक ही परचेस बुक में रिकॉर्ड होंगे, और जितने सारे हमने सेल्स किए हैं उधार पे वो सारे के सारे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. दिस बिकम्स इजी टू go through with the transactions or to verify it as and when we require. परचेज बुक हम ओपन करेंगे तो उसमें से अपन को सारे हमारे क्रेडिट परचेसेस पता चल जाएंगे. As and when we'll go through with the sales book, we will come to know how many sales transactions on credit basis we have done. Here are the types of subsidiary books. The first one is cash book. I'm not going to discuss over here because the upcoming chapter is your cash book. Over there we will discuss it thoroughly. The next comes is goods subsidiary books. Purchase, sales, purchase return and sales return. These are the four types of books which you are going to study in this chapter. Purchase book में हम क्या record करेंगे? All credit purchase transactions. Sales book में all credit sales transactions. Purchase return में all credit purchase return transactions and sales return में all credit sales return transactions. Subsidiary books for bills, इसके भी separate chapters हैं, so you will go through with at that time. Journal proper भी आपका अलग से chapter है, we will discuss at that moment. Types of goods subsidiary books. I am pressurizing the word goods. All the transactions only and only pertaining to or relating to goods are to be recorded in subsidiary books. As I have explained you people, purchase book में क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. सेम वे सेल्स बुक में परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर देयर. परचेज बुक. नाउ these are the key points which you are supposed to keep in your mind. Only credit purchase transactions are to be recorded. उधार पे हमने जितनी भी खरीदारी की है वो ही सिर्फ ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे. कैश ट्रांजैक्शंस या असेट के ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे नहीं. कैश के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में और असेट के ट्रांजैक्शंस जनरल प्रॉपर में. हाफ कैश एंड हाफ क्रेडिट यानी पार्शियल कैश एंड पार्शियल क्रेडिट इज टू बी ट्रीटेड एज फुल्ली क्रेडिट एंड टू बी रिकॉर्डेड. आधा कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, आधा इधर रिकॉर्ड करेंगे नहीं, पूरा का पूरा कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? यहीं पे परचेज बुक में. सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. इससे रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिकल सम्स में देखने को मिलेंगे. हाफ कैश एंड हाफ क्रेडिट इज टू बी ट्रीटेड एज फुल्ली क्रेडिट. नेट अमाउंट ऑफ परचेज इज टू बी रिकॉर्डेड. मींस अगर ट्रांजैक्शन में आपको टीडी दिया हुआ है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे. माइनस करने के बाद ही अमाउंट फिल अप करेंगे. परचेज बुक इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू. द फर्स्ट वन इज सिंपल एंड द अनदर इज कॉलमनर. सिंपल के ऊपर भी सम्स हैं, कॉलमनर के भी ऊपर सम्स हैं. Columnar is again sub bifurcated into two, that is columnar according to the types of goods and expense columnar purchase book. इन सब के ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. Here we will go through with the specimen. This is the specimen of purchase book. आपको ऐसे लिखना होगा purchase book of Shri, जो भी नाम आपको दिया हुआ हो. The first column refers to date
The next one is name of supplier, किसने आपको goods भेजे हैं उनकी नेम का लिस्ट यहां पे आप लिखेंगे. इनवर्ड इनवॉइस नंबर दैट इंडिकेट्स बिल नंबर आपका यहां पे नोट डाउन होगा. लेजर फोलियो नंबर लिखेंगे एंड नेट अमाउंट यहां पे लिखेंगे आफ्टर डिडक्टिंग टीडी इफ इट इज गिवन सो. लास्ट में यहां पे आप करेंगे टोटल क्रेडिट परचेजेस, जितना यहां पे ये टोटल होगा उस टोटल का भी टोटल आपको ये कॉलम में करना होगा. दिस इज द स्पेसिमेन फॉर सिंपल परचेज बुक. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज columnar purchase book. So half of the format remains the same: date, name of supplier, bill number that is inward invoice number, ledger folio. यहां पे तीन बाइफर्केशंस हैं बिकॉज हो सकता है कि जिसका भी अपन प्रिपेयर करें वो तीन आइटम्स में या तीन गुड्स में वो डील करता हो. हर बार जरूरी नहीं है कि यहां पे मैंने फॉर्मेट में टीवी दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया या फ्लोर मिल दिया है तो यही आएंगे. नहीं, हो सकता है कि अगर वो कॉटन का ये अपना क्लॉथ मर्चेंट है तो कॉटन, सिल्क एंड खादी करके भी उसके बाइफर्केशंस आ सकते हैं. सो प्लीज यहां पे इस हिसाब से आपका कॉलम प्रिपेयर होगा एंड द टोटल अमाउंट यहां पे आपको लिखना है. लास्ट में आप क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट परचेज, टीवी का टोटल करके यहां लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर का लिखेंगे, फ्लोर मिल का लिखेंगे एंड टोटल का भी टोटल आपको यहां पे लिखना होगा. Same way, this is the specimen for purchase book with goods as well as expenses. यहाँ पे half of the format remains same: date, name of supplier, inward invoice number, ledger folio number. यहाँ पे आपको लिखना है net amount of goods. ये इन सब के ऊपर, these I am showing only the specimens, इन सब के ऊपर आपको sums आएंगे. As and when you will go through with the practical, you will be more frequent with that. Next comes as railway freight and wages. These are only the examples which I have shown. हर बार railway freight और wages हो ऐसा जरूरी नहीं है, carriage भी हो सकता है और भी दूसरे expenses हो सकते हैं. Now these are the bifurcations for taxes: intrastate supply, input CGST and input IGST, and interstate supply IGST. Okay students, ये हैं आपके bifurcations as per the goods and expenses. I hope you will be very comfortable enough to solve practical questions as and when we will start. Okay students, now coming after theory, we will start with practical question, that is question number 4 given on your page number 151. Please open your textbooks and be ready. What it says: prepare purchase book in the books of Shri Suresh. Now we will start with the sum. This is the particular format in which we will solve the sum. Question number 4, page number 151. What is the heading I have given? Purchase book of Shri Suresh. Okay, as I have explained you in the format, date, as it is purchase book, so name of supplier, inward invoice number is going to be come, ledger folio and amount. Okay, so let us start with transaction dated 1. The way we are supposed to write the date is 2015. Commonly month end we will write. The month is October. Date 1st. What it says: purchased goods of 10,000 from Deepak on 1 month credit. हमने परचेज किया है दीपक से 10,000 के गुड्स हमने परचेज किए हैं. ओके, सो एज इट इज प्योरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो दिस इज टू बी रिकॉर्डेड. व्हाट वी विल राइट हियर इज नेम ऑफ द सप्लायर. सो Deepak account. Is the invoice number given to you? No. Then put dash over here. And the amount is of 10,000. Okay. Now moving further, third transaction: purchased goods of 20,000 from Sardar store at 10% TD, trade discount, invoice number 116. Date you are supposed to write is 3. From whom you have purchased? From Sardar store.
So write down that name. Sardar Stores account. Okay, the invoice number is 116. Now TD is to be subtracted but not recorded. ये सुन के अभी आपको पता चल गया होगा 20,000 का 10% डिडक्ट करेंगे, the amount will turn up to 18,000. Okay, I hope you all are getting how we are supposed to write down over here. Now coming on to date 7, purchased goods of 18,000 from Pankaj on cash. The word on cash here indicates that this is your cash type of transaction. We are not supposed to record this transaction in this sum just because it is to be recorded in cash book. Here the only transactions which are based on credit are to be recorded. Purely credit transactions are to be recorded. As I taught you, half cash and half credit over here is to be treated as fully credit. So these type of transactions only we are supposed to record in the question or in this chapter. Now this is your cash transaction, so we are not supposed to record this transaction in the format, but as I have shown you notes over there, we are supposed to write it down. How we will write, please check it. Once only we will write 2015 October and date. What we are going to write against date? This is cash transaction. That's it. ये जो कैश ट्रांजैक्शन है वो नोट्स में आ गया, जस्ट आपको पता चले कि क्वेश्चन 4 का 7th नंबर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है. दिस इज द इंडिकेशन, जस्ट बिकॉज इट इज कैश ट्रांजैक्शन वी आर नॉट सपोज्ड टू राइट डाउन इन द सब्सिडियरी बुक्स. मूविंग फर्दर, डेट 15, placed order with Rajesh for supply goods of 20,000 at 10% TD. Only we have ordered, only we have given or placed an order, so as it is non-economic transaction, it is not to be recorded. Again we will write date over here. Students, ये जो notes हैं मेरे पास यहाँ पे enough space नहीं होने की वजह से I have written over here, but what you are supposed to do, आपको क्वेश्चन के नीचे ये notes का कॉलम यहाँ पे आपको बनाना होगा. Date 15, what you are supposed to write? Non-economic transaction. Okay. Moving further, date 20, purchased furniture of ₹16,000 from Vyas Furniture Mart on 1 month credit. Only the transactions which are pertaining to goods are to be recorded. Now we have purchased furniture. This is our asset. Again, this is not to be recorded in this format. We will write down over here date 20. What we are supposed to write? Asset purchased to be recorded in this asset purchasing is to be recorded in journal proper. Okay, here we will record this transaction. So till down what we are supposed to do in notes, we will put a note date 20. This is our asset purchase transaction, so we are not writing in subsidiary books. Moving further, Rajesh has sent goods as per order and sent invoice number 350 after adding 1,000 for railway freight. Now this 21 date is connected with date 15. Now here कितना amount है वो हमें देखना होगा. तो we will again move back to transaction dated 15. Placed order with Rajesh for supply goods of 20,000 at 10% TD. Same condition पे date 21 को राजेश
हमें सप्लाई कर रहा है वो वाले गुड्स जिनका हमने 15 डेट को क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया था। 20,000 के गुड्स 10% टीडी पे हमने परचेस किए हैं, कहां से, राजेश से। सो राजेश अकाउंट, द इनवॉइस आपको चेक करना होगा, 21 में दिया हुआ है इट इज 350 और अमाउंट में कितना आएगा, प्लीज पे अटेंशन, 20,000 10% टीडी लेस करके, टीडी इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, 20,000 का 10% अगेन आप करेंगे, इट विल टर्न अप टू 18,000. We are not supposed to write railway freight in this amount. Railway freight is to be recorded in journal proper. Okay. Moving on, date 24. Purchased goods of 14,000 at 5% cash discount. Now, here it is used the word cash discount. Cash discount तभी ही मिलता है जब हम कैश पेमेंट्स करते हैं। So, यहां पे हमने कैश में पेमेंट किया होगा तभी हमें कैश डिस्काउंट मिला है। So, this is treated as your cash transaction. So, कैश ट्रांजैक्शन यहां पे फॉर्मेट में नहीं आएगा, यहां पे लिखेंगे हम डेट 24. What you will write? Cash transaction. Okay? Fine students, यहां पे हमने नोटिंग में डाल दिया है। Moving further on date 25. Purchased goods of 30,000 from Nilesh at 10% TD and half of the amount paid immediately by check. Very important. Half of the amount we have paid immediately by check. आधा अमाउंट हमने पेमेंट कर दिया है, but as per the rules क्या कहते हैं, half cash and half credit is to be treated as fully credit. fully credit को समझ के हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। Date 25. किससे हमने परचेसिंग किए हैं, नीलेश से। सो नीलेश अकाउंट। फाइन, इनवॉइस नंबर कुछ दिया हुआ है, नहीं है। ओके, नाउ 30,000 का 10% हमें कैलकुलेट करना है, इट विल टर्न अप टू 27,000। टीडी डिडक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, now moving further, transaction dated 26. Purchased goods of 15,000 from Chirag at 10% TD and 5% CD. Amount paid immediately. Now here please pay attention on the last three words given to you. Amount paid immediately. As amount we have paid immediately, then it is treated as a cash transaction. It won't come in this format. So यहाँ पे नोटिंग करेंगे डेट 26 का। What it is? Again it is your cash transaction. Okay students, moving further and on the last date, that is 30, purchased goods of 40,000 from Nitin, invoice number 151. नितिन से हमने परचेज किया है और कितने का परचेज किया है, is of 40,000. Date 30, नाम आएगा Nitin account and invoice is given to you 151. Amount is 40,000. Okay, as here sum is over, last में हमें क्या करना होगा, we are supposed to do the totalings of this और ये डबल डैश आपको करना होगा। This indicates we have closed our accounts. लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना होगा total credit. All these are credit transaction, so total credit purchase. ये सारे क्या थे जो हमने परचेसिंग किए थे, वो सारे ट्रांजैक्शंस हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल क्रेडिट परचेज। टोटल है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका टोटल। Total comes to 1,13,000. Okay, I hope you all have got it, and please do along with this one illustration
Your today's homework is question number 4 plus you are supposed to solve, this is question number 4, you are supposed to solve illustration number 1 in the same format as I have taught you, completely same है with different accounts and with different amount, बाकी concept पूरा same है. So these two will be your today's task.